हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जानेंगे पीरियोडिक टेबल के बेसिक्स के बारे में। यहाँ पर दो वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। पहले वीडियो में हम जानेंगे कि बेसिक टर्म्स कौन कौन से हैं जो पीरियोडिक टेबल में यूज़ होते हैं। सेकंड वाले वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रेंड्स कैसे आपके फ्लक्चुएट करते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पर या टॉप टू बॉटम जाने पर। इन दोनों वीडियोज़ में हम क्या करेंगे, पहले वीडियोज़ में आपका बेसिक टर्म्स क्लियर करेंगे, उसके बाद सेकेंड वीडियोज़ में हम ट्राई करेंगे कि आप ट्रेंड्स को ईजिली समझ पाओ। और 100% अगर आप वो दो वीडियोस ढंग से देखते हैं तो आपको कभी भी डिटेल में आगे जाकर दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ अपने तरीके की चीज़ें लाने वाला हूँ और कुछ आपकी बुक्स का मिक्सअप करने वाला है, जिससे आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्या लगे, बहुत ईजी लगे। तो पहले वीडियो में हम जानेंगे बेसिक टर्म्स दैट आर यूज्ड इन पीरियोडिक टेबल। स्टार्ट करते हैं आपका मेटल और नॉन मेटल से, क्योंकि आगे चलकर आपको जानना है कि मेटलिक नेचर क्या होता है, नॉन मेटलिक नेचर क्या होता है। इसको जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या है, मेटल्स होते क्या हैं। अब मेटल की प्रॉपर्टी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लस्ट्रस, मैलिएबल, डक्टाइल, लेकिन वो चीज़ें हम 9th और 10th लेवल पर यूज़ नहीं करते हैं। जैसे आपकी क्लास अपग्रेड होती है, आपकी डेफिनेशन भी अपग्रेड होनी चाहिए। तो हम बात करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स का इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में, कि इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में हम मेटल नॉन मेटल को कैसे डिफाइन करते हैं। अगर आपको पर्टिकुलरली मेटल नॉन मेटल का वीडियो देखना है कि वैलेंसी टर्म में आप कैसे जानना है, तो इसके लिए आप अंडर बिगिनर्स केमिस्ट्री में वैलेंसी वाला वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपका मेटलिक नेचर के लिए। मेटल किसे कहते हैं, देखिए अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो कि मेटल लस्ट्रस, मैलिएबल, डक्टाइल। तो हम डेफिनेशन को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि मेटल की 10th लेवल डेफिनेशन आपको क्या पता होनी चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू दैट लेवल, मेटल आर द स्पीसीज विच donates electron, and this definition in itself is not fully right. If you speak up till this, if you say up till this that metals are the species which donate electron, that is okay, but the more precise definition is metals are those species which donate electron quickly. Now why we need this definition? Because as I told you in the second video, we are going to talk about ट्रेंड्स। तो ट्रेंड्स में क्या होगा, आपके पास सेम नेचर के स्पीसीज आने वाले हैं, तो उसमें क्या होगा, आपको कंफ्यूजन होगा। मेटल नॉन मेटल को तो आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो, मेटल मेटल में कैसे डिफरेंशिएशन करना है, तो उसके लिए आपको इस डेफिनेशन की जरूरत पड़ने वाली है। दैट मेटल आर दो स्पीसीज विच डोनेट इलेक्ट्रॉन क्विकली। जितना जल्दी डोनेट करेगा उतना ज़्यादा मेटलिक नेचर का होने वाला है। ठीक है, और नॉन मेटल इसका अपोजिट आपको याद रखना है। नॉन मेटल आर द स्पीसीज विच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन quickly. Non-metal always accepts electron, as you know, they grab electron from metals. तो ये दो डेफिनेशन है जो आपको मन में लेके चलनी है, बिल्कुल याद करके चलना है, जिससे क्या हो आगे चलकर आपको इसमें दिक्कत ना हो। तो देखते हैं मेटलिक नेचर के टर्म्स में आपको एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको पता चले कि क्विकली वर्ड का यहाँ पर क्या यूज है। भले हम ट्रेंड डिस्कस करेंगे वीडियो नंबर 2 में। तो देखिए सपोज बात करते हैं ग्रुप नंबर 1 की। So lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium, which is radioactive. तो अगर आपको सिंपली क्वेश्चन मिल जाता है कि सोडियम पोटेशियम या पोटेशियम रुबिडियम या कोई भी दो स्पीसीज आपको उठा के दे दी एक ही ग्रुप से, अब एक ही ग्रुप से, इसका मतलब उनकी प्रॉपर्टी सेम होने वाली है। तब आपको कहा गया कि आप ये बताइए कि विच वन इज मोर मेटेलिक। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इस डेफिनेशन का यूज़ करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि सपोज मैं कंपैरिजन करता हूँ सोडियम और पोटेशियम में। सो 2,8,1 फॉर सोडियम, 2,8,8,1 फॉर पोटेशियम। तो इसमें क्या होने वाला, आपके पास दो चीज़ आने वाली है। क्या है, इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन फ़र्क आने वाला है आपके शेल्स में। अब शेल्स में आके क्या फ़र्क पड़ जाता है, शेल में फ़र्क पड़ जाता है, तो फ़र्क पड़ जाता है आपके न्यूक्लियर चार्ज वैल्यू में। अगर आपके शेल्स में डिफरेंस आ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज वैल्यू में भी डिफरेंस आएगा एक ही ग्रुप में। इसका मतलब अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहता हूँ और इस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहता हूँ, क्योंकि मेटल तो है तो डोनेट ही करेंगे, एक्सेप्ट तो करेंगे नहीं। सो डोनेट मीन्स फॉर दिस आई हैव टू चेक द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंड आई हैव टू चेक फॉर दैट इलेक्ट्रॉन विच इज एज मच possible from the nucleus, as much far from the nucleus, that much easy to take out the electron. For that we need to give low ionization energy. So since low ionization energy will be given in this case, why? Because this is fourth shell and this is your third shell. So which one is easy? It will be easy for you to take away electron from fourth shell. तो आपने क्या करना है, आप कहोगे क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्विकली निकलने वाला है, कहाँ से, पोटेशियम से।
पोटेशियम से इलेक्ट्रॉन क्विकली निकलने वाला है, सो के इज मोर मेटालिक देन सोडियम। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है। मेटल्स आर दोज स्पीसीज विच डोनेट इलेक्ट्रॉन क्विकली एंड नॉन मेटल आर दोज स्पीसीज विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन क्विकली। आपको बिल्कुल इसको ध्यान में रखकर आगे की पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपका पॉइंट क्लियर हुआ। अब इसका यूज़ कहाँ करना आपको बता दिया, मेटलिक नेचर के ट्रेंड्स में। मेटलिक नेचर कैसे पता करोगे, कैसे पता करोगे, इससे। नॉन मेटलिक नेचर कैसे पता करोगे, इससे, ठीक है। ये था आपका मेटल्स और नॉन मेटल्स। इसके बाद आपके पास आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ये वाला टर्म भी आपका बहुत यूज होता है ट्रेंड्स के केस में। तो पहले आपको जानना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इफ यू गो टू द डेफिनेशन, इट टेल्स यू दैट द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जिस चीज़ को आप मेटलिक नॉन मेटलिक सोच के चल रहे हो मैं उससे भी यहाँ पर प्रूव कर सकता हूँ कि वो मेटलिक है अगर मैं उसका कंपैरिजन करता हूँ किसी और से, वो भी आपको प्रूव करके यहाँ पर दिखाऊंगा। इसलिए आप कभी भी सिंगल एलिमेंट को, भले आप कह सकते हो कि मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव ओनली, बट आई कैन प्रूव दैट in comparison to some other they are electropositive. But up till now you are listening from your teachers that electronegative element का best example है non metal, but even in non metals we can prove that non metal is electropositive compared to this. So do not go for that type of definition. Electronegativity means tendency of an element to attract shared pair of electron. shared pair of electron को जो attract कर ले आप बोल दोगे यही क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपका है HCl, ठीक है। HCl जैसे आप कंपाउंड बनाते हो बाय योर कोवेलेंट बॉन्डिंग, दिस इज सपोज दिस इज द एक्चुअल कंडीशन। मान लेते हैं एक्चुअल कंडीशन है कि सेंटर में आपके पास कौन है, दोनों के इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने शेड करे। सपोज लेट अस टेक दैट डॉट इलेक्ट्रॉन इज ऑफ H एंड क्रॉस इज फॉर Cl। नाउ व्हाट हैपेंस आफ्टर सम टाइम इज, आफ्टर सम टाइम diagrammatically you can imagine that this will become like this. What you are observing here is you are observing that the shared pair of electron are more shifted toward chlorine. More shifted toward chlorine means the electronegativity of chlorine is 1. Now you can say that chlorine is more electronegative than hydrogen. यहाँ पर आप कह सकते हो। इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि द स्पेसिफिक विच अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। ऐसा तो मैं कह रहा हूँ कि नॉन मेटल में भी इसके बाद बताऊंगा तो आपको दिखेगा कि ये पर्टिकुलर इससे ज़्यादा ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने वाला है, दूसरा वाला इलेक्ट्रोपॉजिटिव निकल गया जिसको आप सोच रहे थे कि ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का है। कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपकी डेफिनेशन क्या होने वाली है, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, जस्ट एज इन द केस ऑफ HCl, Cl हैज शिफ्टेड दैट पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। ध्यान रखिए यहाँ पर शिफ्टिंग होती है, इसलिए आप कभी भी प्लस माइनस शो नहीं करते बल्कि क्या करते हो, डेल प्लस और डेल नेगेटिव। इट मीन्स पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, बहुत फर्क है भाई, प्लस माइनस में बहुत फर्क है। और डेल पॉजिटिव एंड डेल नेगेटिव मीन्स हैज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस, दीज बोथ टर्म्स आर टोटली डिफरेंट। प्लस का मतलब है पूरा इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गया, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन ले लिया। यहाँ पर डोनेट या एक्सेप्ट नहीं हुआ, सिर्फ शिफ्टिंग हुई है। तो शिफ्टिंग के केस में हम क्या करते हैं, डेल का यूज़ करते हैं, डेल पॉजिटिव या डेल नेगेटिव। ओके, अब मैं बात करता हूँ जिसको मैं प्रूफ करने के लिए कह था। सपोज करिए कि आपको किसी ने बोल दिया कि ऑल नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ऑल नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट कंपैरिजन करें तो अब मैंने कह लिया कि F और Cl को इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव के टर्म्स में बताइए, ठीक है। आपको एक ही पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोलना है, एक ही पे इलेक्ट्रो नेगेटिव बोलना है। तब आप क्या करोगे, आप देखोगे कि F के पास ज़्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। क्लियर, वो अलग बात ही आगे जाकर आप पढ़ोगे कि फ्लोरीन भले अट्रैक्ट जल्दी कर लेता है लेकिन ग्रैब नहीं कर पाता। पहले कौन ग्रैब कर लेता है, Cl। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ बात कर रहे हैं किसकी, फिलहाल अपने पास अट्रैक्ट करने की। सो F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ क्लोरीन इज electropositive compared to F. क्लोरीन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंपेयर टू F, मतलब F की तुलना में क्लोरीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। और इसी का उल्टा मैं क्या कर सकता हूँ, ब्रोमीन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन कंपेरिजन टू Cl, ये भी लिख सकता हूँ। क्लियर, तो जब जो आपकी डेफिनेशन है उसका मीनिंग समझिए। मीनिंग है
Electronegativity is the tendency of an element to attract shared pair of electrons. Shared word वहाँ पर बहुत ज़रूरी है, simply memorize मत करिए. Clear? The current problem in every school is what they want is they want their student to have a good merit, nothing more than that. किसी को ये नहीं पड़ी है कि आपका नॉलेज क्या है उससे कोई मतलब नहीं. स्कूल की रेपुटेशन, कॉलेज की रेपुटेशन वगैरह वगैरह, ये सारे ड्रामे आपके चलते रहते हैं. तो आपको इस चीज़ में नहीं पढ़ना, आपको अपनी नॉलेज इन्हेंस करनी है. क्लियर? आप आज स्कूल में हो, आज कॉलेज में हो, कल आप कहीं और होंगे, तो कोई आपकी खास खबर नहीं लेने वाला. क्लियर? तो आपको नॉलेज को डेवलप करना है. ये डेवलप नहीं करना है कि मुझे ऐसे, तो आप चीटिंग करके आराम से पास हो सकते हो. क्लियर? यू कैन cheat from your friend and get a good merit. You may get 90% more than 90% by cheating from somewhere. There are many colleges, there are many schools where you know that if you pay that much money you are going to get good merit, but that is of no use because everywhere the management goes for interviews. There they check your actual knowledge. So do not believe in these type of things. What you have to do is you have to enhance your knowledge. Only think about knowledge. If a definition is given there, definition is there that shared pair of electron, and after some time some teacher tells you that non-metals are electronegative. So do not just simply grab what your teacher tells or what your tuition teacher, who is your tutor, do not simply believe on those statements. Go for the knowledge and go for the reason. What is the reason behind it? Clear? You have to go for the reason. So if definition is given there that electronegative is the tendency to attract shared pair of electron, then why it is said that non-metals are electronegative? So you should go for a comparison. Even non-metals can be designated as electropositive. Okay, even non-metals can be called as electropositive, where in which case when you are comparing it to some more electronegative element. So clearly I have shown you that chlorine is electropositive, and up till now you are reading that they are electronegative. Although whenever there will be a case where metal is there and non-metal is there, definitely this will be electronegative and this will be electropositive, but the case becomes totally different when you are dealing with the same species, because you are going to study about your trends. So in the trend what you are going to witness is you are getting the examples of the same type of species. Then what to do? Then you have to go for comparison. So you should know the meaning of each and every definition there. So I hope now up till now you would have got the meaning of shared pair of electron there. Why they are always writing that tendency of an element to attract shared pair of electron, and they are not writing there that tendency of an element to attract electron is electronegativity. No, that is not a good definition. The correct definition is the tendency of an element to attract shared pair of electron. So this was all about your electronegativity. Then let's move to electropositive nature. What is electropositive nature? The opposite of electronegative nature, means now tendency to donate electron, tendency to donate shared pair of electron or donation of electron. So electronegative, if you know electronegative, no doubt you will know electropositive. If you know everything about metal, you will know everything about non-metals. Okay, just you have to go for the opposite terms here. So electropositive means, suppose same example, H and Cl. So H allowed its shared pair of electron to go towards Cl because its electronegativity was less. It means that H here was electropositive. Do not use this abbreviation in your school. This is not a standard abbreviation. Okay, when you write in the school, write full electropositive. Okay, electropositive. Electropositive nature for H and electronegative nature for chlorine. So here I am writing the short form just to, because you know what is the meaning of this, but do not write this in your school. Okay, electronegative is Cl. Why? Tendency to attract shared pair of electron. Hydrogen, tendency to donate shared pair of electron. So donation, acceptance, these two terms will tell you which is electropositive and which is electronegative. So I hope you know what is metallic nature, non-metallic nature, electronegativity, electropositivity. Now the most confusing term for which most of the students write the same definition because they get confused in that is your ionization potential and your electron gain enthalpy. Okay, electron affinity also you can call it as. So ionization potential, let's talk about this first. Ionization potential. Here what you have to remember is
The key point that you have to remember is electron donation. Okay, you have to think about electron donation. Means you have to donate an electron, means, or you can simply say that ejection of electron. इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपने कैसे भी मजबूर करना है उस पर्टिकुलर एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन देने के लिए. अब वो कैसे होगा? दैट विल बी द हेल्प ऑफ एनर्जी. दैट विल बी विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, एंड दिस एनर्जी इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल. Okay, whenever you hear the word potential, most of the students, what they get in your mind, their mind is something related to current. This is not at all related to current. Energy, IP भी एक एनर्जी है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी एक एनर्जी है. दोनों के दोनों एनर्जी ही हैं. ओके, दोनों के दोनों एनर्जी है. आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों ही एनर्जी है, मतलब वो एनर्जी डिफरेंट टर्म्स में है. यहाँ पर एनर्जी दी जाती है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए. द एनर्जी रिक्वायर्ड टू emit an electron from an isolated gaseous atom. Okay, that the element on which you are doing this, it should be isolated gaseous atom, because gaseous state is the most energetic state, and if you take it isolated, there is no interference of outside energies. इसलिए इसको हम क्या लेते हैं? आइसोलेटेड. हर एक वर्ड का मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है. क्लियर? वाई वी आर कॉलिंग इट आइसोलेटेड? वाई ओनली गैस स्टेट? वाई नॉट आइसोलेटेड सॉलिड स्टेट? गैस स्टेट इज एनर्जेटिक स्टेट. आइसोलेटेड मीन्स द particular element on which we are working, others energy should not interfere there, so we take it as isolated. Okay, now electron affinity, same like this. Electron affinity, the tendency of an element to, here it was ejection, here and here it will be addition of electron. So how you are going to define electron affinity here is, just see the opposite of ionization potential. Take the opposite. As I told you, here it was electron donation, so here it's electron acceptance or addition of electron. Okay, here we have to add electron, and for adding an electron, what we need to do? We don't need to do anything. Here we are providing energy. Do we need to do anything? No. Here energy will be released. In terms of energy, we don't have to do anything to release energy. Okay, giving energy is our work. As suppose we are cooking food, so for cooking food we need to provide energy there. But there are many processes for which we need not provide any energy. Okay, so electron affinity here means, although initiation energy is to be provided everywhere. Suppose it's a burning process. Let's take an example. For burning, initiation energy you have to give. Here also initiation energy will be there, but this energy after some time will be released. So energy will release when electron is accepted. Here it's not ejected. So the case is totally different for IP and EA. They are just opposite. Similarity in the last term that I will tell you. So electron acceptance, when what happens with it? It leads to release in energy. So overall definition becomes electron affinity is the amount of energy released. That is also an energy. When an electron is added, where this is the same term, isolated gaseous atom. Now let us write it together so that you can make a flow chart, and then you will be easy, it will be easy for you to give the definition. Clear? Comparative study करते हैं इसकी. देखिए, IP EA, basic terms. See, both are energies. First of all, these are the terms which are related to energies. Okay, ionization potential is the amount of energy given. EA is the amount of energy released. So if you want, you can write it here: energy given. Here you have to give, and energy released. But remember, initiation energy is a different thing. Okay, I'm not talking about initiation energy. I'm talking about the energy which will be released when electron is released. Better than release, we can say when electron is ejected. Okay, and here when electron is added. Okay, ionization potential is the amount of energy given to remove an electron from where? From isolated gaseous atom.
isolated gaseous atom. And here electron affinity is the amount of energy released when an electron is added where to an isolated gaseous atom. It is very easy. If you know the definition of ionization potential, you will know the definition of electron affinity also. And again, no need to memorize the definition, no need to memorize your bookish definition. If these points are there, nobody can deduct your mark in definition part, that your definition is not same just as it is given in the book. Clear? Bookish, no need of bookish definition. What you have to write is ionization potential is the amount of energy given to eject an electron from an isolated gaseous atom. That's over. Electron affinity is the amount of energy released when an electron is added to an isolated gaseous atom. This is how you have to give your definition. Okay, memorizing, no need to memorize. That is something which you should delete from your life. Delete that thing from your life. Knowledge, your own definition. Okay, make your concepts strong. So this was all about your IP and electron affinity. So these are the two terms. Actually, this term is the most confusing term. Metallic nature you can tell, non-metallic nature you can tell. But what happens is, when I was in a school, so there what the student used to write the definition is ionization potential is the amount of energy released. Okay, sometimes they used to write this release word here, and actually it's not their mistake, it is little confusing. Okay, so this part was written here, sometime electron added was here, sometime electron ejected was here, so it is little confusing. Just you have to remember is whenever electron is to be ejected, you should provide energy, and whenever electron is added, some energy is released. That you have to keep in your mind. Addition of electron, energy releases. If you want to eject an electron, energy is given. That's what you have to remember, and this part is your same for both. I give you the reason why isolated and why gaseous state only. Okay, so these two terms are little confusing. You should study them thoroughly. Okay, now let's move on to the most important part. ट्रेंड्स में जो हम पढ़ने वाले हैं, ट्रेंड्स में आप किसी चीज़ का भी आंसर दे सकते हो केवल एक चीज़ से, वो है आपका न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज के बेस पे ये ऐसी चीज़ है जिसे हर स्टूडेंट को आना ही चाहिए, कंपलसरी है हर स्टूडेंट के लिए न्यूक्लियर चार्ज को जानना। न्यूक्लियर चार्ज है क्या, इससे आप मेटालिक नॉन मेटालिक नेचर को बता सकते हो। कोई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो क्यों है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है तो क्यों है। सारे के सारे जो आपके ट्रेंड्स हैं वो मोस्टली बेस्ड हैं आपके न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर ही। तो आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियर चार्ज है क्या और किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। ये आज का लास्ट टॉपिक रहेगा, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे आपका ट्रेंड्स, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नो व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है, देखिए आप सिंपली इसको समझ सकते हो, भले ये कोई डेफिनेशन नहीं है लेकिन सिंपली आप इसको समझ सकते हो कि पावर ऑफ न्यूक्लियस टू होल्ड इलेक्ट्रॉन। विच इलेक्ट्रॉन, योर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। दिस इज नॉट द एक्चुअल डेफिनेशन, just so that you can keep this in your mind to know what actually nuclear charge in a simple way. Power of nucleus to hold electron, that much you have to keep. Otherwise, what is nuclear charge? Nuclear charge is the tendency of nucleus to have a grip over the valence electron. As much more grip, okay, that much hard for you to take away the electron from there. That you should keep in your mind. So how nuclear charge affect all these factors that we are going to study in video number 2 is because, see, suppose if I talk about this is electron here and this is electron here. You know that nucleus is positively charged. Why? Basic question, why nucleus is positively charged? Because the subatomic particle residing there is proton as well as neutron. Neutrons are neutral and protons are positive, so charge there will be positive, and electrons are negatively charged. So definitely there will be a electrostatic force of attraction between electron and your nucleus. Remember, whenever there is plus minus, there is a force which is called as electrostatic force, which you would have studied in physics part. Okay, so electron now it depends on the electron whether it will be ejected or not on the basis of its distance from nucleus. Distance, दूरी, clear? आपको ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन कितना दूर है। ज़्यादा दूर है, आराम से आप उसको इजेक्ट करा सकते हो। If electron is near, it will be hard for you to take away the electron. Why? Because nearness means now the forces are stronger. Forces are strong. Most of the case, if you see the your force between Earth, gravitational attraction in that part, chapter number maybe it's 9 or 10 in your
in the NCERT books, I don't know what is the actual number, but under gravitation you would have seen a formula there. Force equals to G m1 m2 by r square. Okay, there's a formula there. So always remember that this part plays a very important role everywhere. Here also it plays an important role, means distance between two bodies. In this formula also, the force is dependent whenever there are two bodies. Suppose this is body number 1, body number 2. So what will be the force acting there? That we calculate by this formula. In mathematics you would have, sorry, in physics part you would have studied this. G m1 m2 by r square. It means that this distance plays a very important role in deciding the magnitude of force. Here also the same thing. Electrostatic force depends on distance between nucleus and the electron which is to be ejected. Now when electron is far away, then these forces get weak. They are weak then. But if electron is near to this nucleus, these forces are strong. And when these forces are strong, that is the condition when an element behaves like a non-metal. Non-metal, go back to the definition. The first thing that we studied was non-metal are those species which grabs electron quickly. Means grab means they won't donate, and here it is the case for this particular case. In this particular case, what you are observing is, since this electron is very near to the nucleus, so there are less chances of getting electron donated. So it will be hard for you to take away electron from here. So more nearness to the nucleus means more nuclear attraction or nuclear charge will be more there for this particular electron, and because of more nuclear charge, it will be hard for you to take away that electron. But if we talk about this, distance is more, so forces are weak now. Since forces are weak now, what will happen? It will be easy for you to take away electron, and more easy than this will be this case. Nucleus first, second, third. Now one more shell is added. Now it is more easy for you. Why? Because distance got increased more. So as much distance increases, that much easy for you, and that is the case of metal. So in the trend, when you will study, suppose same example we take lithium, sodium, potassium, you will get to know that potassium, as we discussed already, potassium is more metallic than sodium. Why? Because the valence electron of potassium is far away from nucleus compared to the nucleus of sodium. In nucleus of sodium, the electron to be ejected is near in comparison to your potassium. In the same way, you can say that for lithium. More than lithium, metallic will be sodium. Why? Because lithium 2,1, sodium 2,8,1. Now for sodium, the distance is more, so it will be more metallic, because it will be easy for you to take away the electron, and already we studied as much easy electron to be taken out, that means that we are talking about metals. So sodium will be more metallic compared to lithium. Also we can say that lithium will be electronegative compared to sodium, or non-metallic compared to sodium. Okay, non-metallic compared to sodium. In this way we can define the terms which are very, very important in your periodic table. Now I hope all these terms are clear to you. Why? Because after this, what you will get questions, what are the type of questions that you're going to get is, you have to show the comparative study. In the same group, you have to show the comparative study. Means which one is more metallic, which one is less metallic, why it is more metallic, which one is electropositive, which one is going to have a higher IP, which one is going to have a lower IP. All these things you should know only after you have watched this first video. You will get to know all these things when you will watch the first video, because this is your basic knowledge of periodic table. After the basics, now we are going to move on to the question which are actually asked in examination. Very rarely someone will ask you that what do you mean by metallic nature, what do you mean by non-metallic nature, because now this is not your that class in which the examiner is focused upon your rote learning or how much you can memorize. He is interested in knowing how your mind works, how you're thinking, because you have to imagine. Suppose you're imagining about sodium, so you have to imagine the valence shell, you have to imagine the penultimate shell, you have to imagine those shells. After imagining those shells, you can give the answers. Okay, so the most important part will be your lecture number 2, but do not think that lecture number 1 is waste. This is not a wasted part of this periodic table, because your base will get stronger after watching video number 1, means this video. Second video we are going to upload soon.
In that video, we are going to talk only about the trends, and I'm 100% sure after watching that second video, you can answer any of the questions which are related to your trends. So till then, keep growing, keep studying. Thank you.